Hello folks, today I'm going to unbox Acubit pulse oximeter, which is very essential nowadays, and this is a essential products for every household because of spreading of corona pandemic situation. And this product made from medical grade material, 4-direction display. I will show you alarm and pulse rip, which is bit convenient when like some device beeps and it will alert you that the operation is successful. 1 year warranty they are given, responsibly curated. Wow. So you can see here that the color display is showing here, and the important marketed by the Bright Healthcare. हम लोग का इंडिया से ही मार्केटिंग हो रहा है, और इधर 3000 का प्राइस है, और इन दिस पैंडेमिक आई हैव टू बॉट इट फॉर 2499, which is bit costly because I think so few months ago I saw this item around 1599 or something else, but I don't have choice now to buy something else. And you can see here the country of origin is China, whatever this is, and there is a QR code. You can easily reach to customer support by scanning this QR code. And now we are unboxing it, and some display type is something this color notifications is given here, and this is the I think the theory part. The display contains SpO2 pulse at ear perfusion index, battery level indicator, pulse bar graph. So मैं बता देना चाहता हूँ SpO2 है the oxygen saturation level of your body, and how much oxygens are carried by your hemoglobins to your different body parts. And according to some researches that the 95 to 100 percentage is more normal to other readings for this pandemic. एंड द प्लेथोमेसोग्राफ जो है वो वाला है आपका बॉडी स्कैन. ये बहुत बड़ा मशीन आता है फॉर टू स्कैन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जमेंट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी ऑर्गन्स लाइक लंग्स और समथिंग एल्स, बट आई डोंट know how it will work by this small sensor. And this small sensor works on infrared technology. Some infrared and some sensors are scanning through your finger, and it will show some variable readings. So हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं. सब कोई भरोसा कर रहे हैं, सब कोई रिकमेंडेड भी कर रहे हैं कि ये वाला घर में रखना है. तो देखते हैं इसके अंदर क्या है. और फिर से मैं दिखा रहा हूँ मेड फॉर इंडिया, एंड दिस इज़ नॉट मेड इन इंडिया. काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स दे आर गिवन. ये 16 of August 2020 this is made on, and this is the warranty card. I don't know how much this is reliable, how much it will work, and how they are support you, and how they will support you. So इसको फेंक देता है जो भी हो. तो दिस काइंड ऑफ मैनुअल्स दे आर गिवन. सो हम लोग देखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फ्रंट व्यू, बैक व्यू, समथिंग ऑपरेशन. एंड दिस काइंड ऑफ लो battery they are given, and this sounds like also the Chinese potato whatever it is, and but they have given, and you don't have to buy extra from the shop to put in. So, and this is the main product. This is the main sensor, and this made up with some cheap plastic product, and this is so much light product. I don't know so how it will works and how much this is reliable. And this looks like so cheap, and HealthSense logo is engraved, and the LED display is over there, and this is the one button touch response, and this kind of hinge is there, and you have to insert your index finger within it. So I will show you. And this is the product name and some battery voltage, blah blah blah, serial number, IPX2 is rating. This kind of strings they are giving to hold it.
दिस इज़ द समथिंग मेला लाइक प्रोडक्ट. इफ़ यू गो टू मेला, अगर आप मेला जाओगे और कुछ चाइनीज़ प्लास्टिक का प्रोडक्ट खरीदोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मोल्ड, ये प्लास्टिक मोल्ड, and this is the packaging looks like 2499 guys. Whatever it is, just I'm just crossing my fingers that it will work charmedly. So I'm operating it single-handedly. Just give me some seconds to इसमें मैं बैटरी भर के फिर ऑन करके दिखाता हूँ हाउ दिस विल वर्क. एंड यू नो गाइज दैट आई हैव Note 8 or the Samsung Note 8, and that mobile also have SpO2 sensors and heart rate sensors. I will मैं ज़रूर इसके बारे में एक कंपेयर करूँगा. आई विल श्योरली कंपेयर इन बिटवीन दिस टू डिवाइस हाउ मच reliable the Note 8 is. But I have some doubt, and that Note 8 is it belongs to me, and I'm carrying to it different places. So I bought this for my parents. So I will surely show you the how much different it is from each other. So मैं दिखाता हूँ इसमें ये बैटरीज डाल के. Stay with me. So this is started. SpO2 percentage, there's some beeping sound is coming from it. I don't think so. It's switched off automatically. I think I have to switch it on by press this button. Pulse oximeter version 1.00, sensor off, and the heart sign is coming out. So I think this device is asking me to put my index finger into it. Trust me guys, I'm operating it single-handedly. So I have मैं अपना उंगली अंदर डाल दिया हूँ. अंदर एक सॉफ्ट टाइप का फीलिंग आ रहा है. आई थिंक रबर टाइप ये समथिंग इज़ विद इन इट टू सपोर्ट योर फिंगर. सो एंड जस्ट उसके पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा कि प्लीज़ 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 इसको यूज़ करने के बाद ज़रूर अपना हाथ धो लें, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये कौन यूज़ किया या फिर ये रीसेल हुआ या नहीं. ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है आजकल का. कोई 10 दिन यूज़ करके ये मतलब वापस कर देता है, या फिर ये रिफर्बिश्ड भी हो सकता है. जो भी हो, अपना सेफ्टी अपने पास है. ठीक है, मैं ये ऑन करता हूँ. पल्स ऑक्सीमीटर इज शोइंग अप. देखते हैं. अच्छा, इट्स गिविंग सम एंड यू कैन hear the beeping sound. 97, 98. Hope I'm okay. I don't know how much this is reliable. It's showing 110 my heartbeat. My wife is away from me in another room, but my heart is beating too fast without seeing her. Oh my god. You can ask me one thing, the perfusion, what is perfusion index? Perfusion index matlab how much oxygen is going into every organ. 7.7, 6.5, it's fluctuating. I don't know how much this is reliable. 97% of SpO2, this is okay. And in the beginning I'm telling you the normal rate is 95 to 100, and this is showing the 95, 97, 94. I don't know that I am operating it single-handedly. I don't know how much this will fit to my index finger, how much it is reliable. So I will surely give you a genuine reply, a genuine review after using some days. मैं ज़रूर आप लोगों को ज़रूर इसका रिव्यू दूंगा. So just I can tell you one thing. 5-6 मिनट यूज़ करने के बाद ये जो बीपिंग साउंड है वो होता रहेगा, एंड दिस रीडिंग इज़ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. तो कोई फिक्स रेट नहीं आएगा. आप जितना देर उंगली डाल के रखोगे उतना रीडिंग फ्लैक्चुएट करता रहेगा.
सो मैं इसका फुल रिव्यू मैं ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड गाइस. थैंक यू एंड स्टे सेफ. Wear mask obediently and ask other to stay safe. Bye. Thank you.